Hello friends, welcome to ProTalent, and this is Nitin Parmar from ProTalent bringing to you module 3 of legal news for July month. July month में legal news turn out to be very critical because बहुत सारे bills pass हुए हैं. So I will be providing you more videos of this July month, ठीक है, in legal news part. Please go through that. ओके और उसके साथ मैंने ये कोशिश करी है दैट आई विल बी गिविंग यू छोटे छोटे वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट सो दैट यू कैन डाइजेस्ट ऑल दिस कंसेप्ट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. ओके चलिए लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट क्या बात करने वाले. वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेंटली पास्ड बिल्स. वन इज कॉल्ड नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 एंड RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019. दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे ओके और ये दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पास हो गए. ठीक है, तो अब हमारा काम बनता है कि उसको समझना कि एग्जैक्टली क्या हुआ. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड RTI अमेंडमेंट. ओके सो दिस इज ऑन 1st of August राज्यसभा passed this NMC Bill 2019 replacing this controversial Medical Council of India. I'm sure you are aware that there are professional bodies are generally governed through such kind of council. ठीक है, अभी प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं. ठीक है, यू हैव अ मेडिकल विच इज अ प्रोफेशनल कोर्स, लॉ इज अ प्रोफेशनल कोर्स, CA इज अ प्रोफेशनल कोर्स. ओके सो दे आर गवर्न्ड थ्रू देयर स्पेशल बॉडीज. सो MCI was aiming to regulate the medical education as well as medical practices. Remember, I mentioned professional courses are to be managed by such kind of council. They not only regulate education but they also regulate practices. Okay, so ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको समझना बहुत जरूरी है. ध्यान रहे, भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टर्न आउट टू बी मोस्ट करप्ट बॉडी. ठीक है, और इन्होंने पूरे मेडिकल एजुकेशन की और प्रैक्टिस में काफी परेशानियां करके रखी थी. अब इसको रिप्लेस करके वी हैव दिस NMC. सो व्हाट इज दिस NMC ऑल अबाउट? सो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल seeks to improve the medical education system in the country by ensuring availability of adequate and high quality medical professionals. ठीक है, periodic assessment of this medical institutions, adoption of latest medical research by medical professionals as well as effective grievance redressal mechanism. So 360-degree work is done by this National Medical Commission of India. So बताइए दोस्तों, लॉ के लिए, ठीक है, लॉ के लिए कौन सी बॉडी काम करती है ऐसा? दैट इज कॉल्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ये सुनो, पॉपुलरली नोन एज BCI. आपने सुना होगा रिसेंटली BCI ने 3 साल का मोराटोरियम पीरियड डाल दिया ऑन लीगल एजुकेशन. दैट मीन्स नई कॉलेजेस नहीं खुलेगी अगले 3 साल तक. This is basically the rule provided by BCI. They regulate everything. Here also it is NMC will regulate. It has replaced MCI Act of 1956. So 1956 of MCI Act has been replaced by NMC Act of 2019. Remember, MCI is now replaced by NMC, and MCI was a big controversial body. So what was the stricture provided by Supreme Court in 2016 on Medical Council of India? They said MCI is ossified, which is fixed and unable to change an opaque body. They are unable to cope with humongous task of this managing medical education across the country. MCI represented neither professional excellence nor its ethos. So this is a kind of comment from Supreme Court turned out to be really a big issue.
ओके, सो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सो एक नई बॉडी लानी पड़ेगी। उस नई बॉडी का काम क्या होगा ये देखें। दिस न्यू बॉडी NMC विल हैव टोटल 29 मेंबर्स। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज है, जीके में पक्का काम करेगी आपको। सो टोटल 29 मेंबर्स, 20 will be nominated and 9 will come through election. So that way it turns out to be really problematic. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इलेक्शन से आने चाहिए और नॉमिनेटेड कम आने चाहिए। सरकार ने पूरा कंट्रोल, ठीक है, अपने हाथ में रखा है। फाइनल ईयर MBBS एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज exit test. I'm sure you understand what is an exit test. ठीक है, it is easy for the people to enter a college, but if they don't work hard and they don't do right work, उन लोगों को पास होने में दिक्कत हो जाती है, और फिर भी लोग पास हो जाते हैं और डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं। ध्यान रहे, इंजीनियरिंग इज नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी, ओके, तो वो अलग दुनिया है। इंजीनियरिंग एजुकेशन इज नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन, इट इज लॉ, मेडिकल, दे आर, ओके, ठीक है। हियर they are looking at an exit test, and this exit test will also be looked as entrance exam for post graduation. It will be a screening test for the students who passed from a foreign country, ठीक है, as well as it is a licentiate exam. These three things is what it will serve purpose to. One is entrance test for post graduation, screening test for the foreign students, and licentiate examination. And then they will be developing medical advisory council, which will include one member representing each state and union territory. There will be chairman of UGC being a part of it, and director of NAC will be part of this, and they will advise and make recommendation to this National Medical Council. And in addition to that, there will be 4 boards. So these are the 4 boards, okay? ठीक है, remember this entire structure of NMC is as per रंजीत रॉय चौधरी एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा बनाया गया है। सो अगर आपसे पूछा जाए NMC कौन सी कमिटी के द्वारा, सो दिस इज रंजीत रॉय चौधरी, ये याद रखिएगा। द बिल पुट्स fees on 50% seats of MBBS and PG colleges. Rest of the fee structure has to be decided by a college themselves. Medical colleges have to conform to the standard of NMC, ठीक है, but there is no need for annual renewal, and all AIMS and JIPMR की जो अलग से एग्जाम होती थी, now that will be conducted through NEET, okay? So ये बड़े changes है, okay? सवाल अब ये पैदा होता है that why doctors were against this, ठीक है, अभी डॉक्टर इसके खिलाफ क्यों थे? So there was one section called section 32, ठीक है, which authorizes government to allow non-medical degree holders to practice medicine as a community health provider. This provision is vehemently opposed by the doctors, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है that it will legalize quacks in the country. You know quack? So the quacks are the false medical doctors or false medical practitioners rather, okay, because they are not the real you can say degree holder and they cannot practice, they are quacks. So इसलिए ये लोग oppose कर रहे हैं. And number 2 is this will allow anyone with a limited exposure to this modern medical system to recommend medicine, and they were opposing the issue of 70% people are not elected member, they are nominated, ठीक है, so therefore they were opposing. Look at the kind of doctor to population ratio in our country, that is 1:1456 as compared to WHO standard of 1:1000. So that means भारत में मेडिकल की काफ़ी हालत खराब है, and then we hope that NMC will serve the purpose, but NMC should look into the scenario of doctors. They have to take into consideration their faith, ठीक है, their trust, and more importantly their cooperation will be needed, okay? Now we talk about another important one called RTI Amendment Bill 2019, Right to Information Act. One turns out to be one of the very critical part, क्योंकि RTI एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि कॉमन मैन, कोई भी गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल बॉडी से एक इंफॉर्मेशन निकालना है, आसानी से निकाल सकता है। एक कागज पे एप्लीकेशन करो, थोड़ा सा पेमेंट करो, एंड यू गेट दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भारत में पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी,
इंफॉर्मेशन मिलना वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है. You are looking at information which is available in a private field through, let's say, Google and various other forum. You can get it that easily, but to get it from government is a very tough task, ठीक है. और ये RTI जो आया था उसने बड़ा पावरफुल काम कर दिया, ठीक है. अब इस RTI को गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट लेस पावरफुल. लेट्स सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग देयर, ठीक है. RTI, by what is the current position of this, you can say, RTI position holder. So you know RTI Right to Information Act के द्वारा we have Chief Information Commissioner, and then we have Information Commissioner, and then we have a State Information Commissioners, ठीक है. So ये उनकी अलग अलग तरीके की पोजीशंस होती है, ध्यान रहे, ठीक है. दिस RTI के द्वारा ये जो बॉडीज बनी हुई है, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, but they were put at par in terms of their status, ठीक है, with some other constitutional body. So Chief Information Commissioner का status was as good as Chief Election Commissioner, while Information Commissioner का status was as good as Election Commissioner, while State Information Commissioner was as good as Chief Secretary to the state government. That was basically the kind of position, ठीक है. तो भैया आपको पता होगा that this Information Commission is a statutory body. It is developed through a statute, while Election Commission is a constitutional body. Constitution में लिखा है proper that there has to be Election Commission of India, and then there is a Supreme Court which is also constitutional body. Okay, so these are the various bodies. अब आपका ये बैकग्राउंड अगर आपको पता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इलेक्शन कमीशन एंड द सुप्रीम कोर्ट आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नंबर 1, एंड नंबर 2 दैट Chief Information Commissioner had a status as good as CEC and Information Commissioner had a status of as good as Election Commission, ठीक है ना. ये आपको पता है, चलिए ग्रेट. सो अब इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, ठीक है. सेक्शन 13 एंड 16 के द्वारा इन्होंने क्या बड़े बदलाव करे. सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो था टर्म, ठीक है, दैट इज सर्विस उनकी कितने ड्यूरेशन की होगी, और दूसरा सैलरी, और तीसरा स्टेटस. स्टेटस तो उन्होंने निकाल दिया, दिस इज नॉट एज गुड एज इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है. तो स्टेटस तो उन्होंने हटा दिया. अब उनका प्रोविजन क्या था पहले, इट वॉज अ 5 year or until the age of 65, whichever is earlier. ये सिनारियो था. They replaced it with for such a term as may be prescribed by the central government, which means central government जो चाहे वो यहाँ पे कर सकती है. मतलब 5 साल का टेन्योर रहा नहीं, ठीक है. सो दैट मीन्स अब उनके टेन्योर का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया. सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विसेज वर अर्लियर, ठीक है, विल बी एट पार विद सीईसी और ईसी. अब इन्होंने क्या बोल दिया, शेल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर दे दिया 3 चीजों में, टर्म, सैलरी और स्टेटस. ये तीनों 3 चीज इन्होंने जो पुरानी सिचुएशन थी वो निकाल दी. गवर्नमेंट का मानना ये था दैट दे वर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे वर स्टैट्यूटरी बॉडी, सो दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड दैट हाई पोजीशन. दिस इज व्हाट लॉजिकल. बट RTI को इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज मस्ट, ठीक है. और वो इंडिपेंडेंस यहां से हटा दिया. क्यों, टेन्योर कितना है सरकार डिसाइड करेगी, सैलरी कितनी है सरकार डिसाइड करेगी. मतलब RTI का जो पावर था एक तरीके से वो अब था का था रह जाएगा. यस और नो, आगे फ्यूचर में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे पता नहीं. सो दिस इज रियली अ बैड सिनारियो व्हिच इज क्रिएटेड इन आवर कंट्री, बट दिस इज हाउ द बिल हैज बीन पास्ड. Right to Information Amendment Bill 2019. Great. Okay, I have covered these 2 issues and you enjoyed learning with me. ठीक है, दोनों issues कौन कौन से, RTI, और पहला कौन सा था दोस्तों, किसके बारे में बात करी मैंने, वेरी गुड, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, NMC एक एक्ट बन चुका और दोनों में काफी कंट्रोवर्सी आई थी. दोनों बिल पास हो चुके हैं, ठीक है. यह था हमारा जुलाई मंथ का एक मजेदार सा एनालिसिस आपके लिए, ठीक है. मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द नेक्स्ट मॉड्यूल्स
which are coming, and they'll give you a lot of good knowledge. If you like this video, please make sure that you like this, share with a lot of people, and do not miss out to subscribe our channel and get this entire content on protalentdigital.com. okay, protalentdigital.com के ऊपर आपको ये कंटेंट मिलेगा, उसको आप लेना भूलिएगा मत. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.